Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video and that is please listen poems question and answers. तो बच्चों इस वीडियो में हम देखने वाले इस पोएम के वार्मिंग अप एक्टिविटीज, मार्जिनल क्वेश्चंस एंड इंग्लिश वर्कशॉप. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं फर्स्ट वार्मिंग अप एक्टिविटीज. तो यहाँ पे कहा गया है 20 क्वेश्चंस. तो यहाँ पे करना ये है कि फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 to 8 जिसमें एक इंसान बनेगा लीडर और वो करेगा चूजेस वन आइटम just like a picture, a paragraph, or a lesson from any of the 9 standard textbooks. और वो पिक्चर पैराग्राफ लेसन चुनने के बाद उसका रेफरेंस एक पेपर के स्लिप पे लिखेगा और उसे फोल्ड करके रख देगा. तो एक्चुअली करना क्या है, अदर्स आस्क हिम और हर क्वेश्चंस एंड ट्राई टू गेस व्हाट इट इज़ फ्रॉम हिज और हर आंसर्स. तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो एक ग्रुप में रहेंगे 20 से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे. दूसरा रूल है, यू कैनॉट आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक व्हाट डू यू हैव इन माइंड. हाँ, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क डब्ल्यू एच क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन और लीडर को भी इसके ट्रूथफुल आंसर्स देने हैं. तो यहाँ पे मैंने करके दिखाया है. तो आप चाहो तो स्कूल में अगर ये सवाल पूछा गया तो इसी तरह ये कर सकते हो. तो अगला है एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स. तो यहाँ पे बनानी है जोड़ियाँ. लिस्ट द थिंग्स ऑन विच यू हैव सेम ओपिनियन एंड ऑल्सो द ones ऑन विच यू हैव डिफरेंट ओपिनियंस. Prepare a list of 10 things and all see how far you agree, disagree with your friend. Some useful phrases are given alongside. तो यहाँ पे आपको बात करने के लिए कुछ टॉपिक्स भी दिए गए जैसे क्लोथ, लेटेस्ट फैशन, परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट इन योर एरिया, टीवी प्रोग्राम्स, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन योर एरिया, मोबाइल ऐप्स, फ्यूचर ऑक्यूपेशंस, करियर्स, एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, लेटेस्ट न्यूज़ आइटम्स. और यहाँ पे एग्रीमेंट, आस्क फॉर योर फ्रेंड्स ओपिनियन. डिसएग्रीमेंट के लिए आपको दिए गए कुछ फ्रेजेस. तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन डायलॉग के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश की है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजेश और मयूर का डिस्कशन. हालांकि ये थोड़ा छोटा है, आप चाहो तो इसमें अपने खुद के पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स मार्जिन क्वेश्चंस. तो यहाँ पे पहला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन. तो दोनों वर्ड का मतलब सुनना ही है, लेकिन फिर भी उसमें डिफरेंस क्या है. Answer: when sounds or noises come to your ears without any effort done by us is called hearing, and when we pay attention to particular sound is called listening. Next है think, guess and answer. तो यहाँ पे सवाल है, how old is the speaker in the poem. तो आंसर आएगा, the speaker in the poem seems to be a teenager. Next, who is he or she talking to. वो किससे बात कर रहा है. तो आंसर, he or she is talking to his or her parent. Fourth, what must have happened before the speaker says all this. पोएम में स्पीकर बहुत सारी बातें कर रहा है. तो आपको क्या लगता है इससे पहले कौन सी घटना घटित हुई होगी. आंसर, द स्पीकर मस्ट हैव फेल्ड इन एनी टेस्ट और कंपटीशन, सो हिज और हर पेरेंट्स आर गिविंग एडवाइसेस और ट्राइंग टू हेल्प हिम और हर. फिफ्थ, हु इज द ऑथर टेलिंग दिस स्टोरी टू. यह ऑथर किसे स्टोरी बता रहा है. तो आंसर, द ऑथर इज टेलिंग दिस स्टोरी टू अस और द रीडर्स और द पेरेंट्स. अगेन थिंक, डिस्कस एंड आंसर. इज द स्पीकर अवेयर ऑफ हिज शॉर्टकमिंग्स. तो जो स्पीकर है क्या वो अपने खामियों के बारे में जागृत है, क्या अपने खामियों को वो जानता है. आंसर, यस, द स्पीकर इज अवेयर ऑफ हिज शॉर्टकमिंग्स. सेवन, डज ही और शी वांट टू इम्प्रूव. क्या वो खुद को सुधारना चाहता है. आंसर, यस, ही और शी वांट्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ. एट, इज ही और शी कॉन्फिडेंट दैट ही और शी कैन इम्प्रूव. क्या उसको विश्वास है कि वो खुद को इम्प्रूव करा सकता है. आंसर, yes, he or she is confident that he or she can improve himself or herself. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही और शी वांट टू वर्क इट आउट. तो वो खुद को किस तरह सुधारने वाला है. आंसर, he wants to work it out by practicing it again and again. 10, is the poet willing to listen to others. क्या पोएट दूसरों की बातें सुनने के लिए भी रेडी है. आंसर, yes, the poet is willing to listen to others. Last question, discuss how you can be a good listener. Answer, I can be a good listener by paying complete attention to the speaker.
and by remaining quiet during his speech. I will let the speaker complete what he or she is saying and will not interrupt him or her. I'll focus on his or her facial expression to understand the feelings of the speaker. Now let's move towards English workshop. First question, the poet uses a free conversational style in his poem. और ऐसे स्टाइल को कहा जाता है इट इज़ कॉल्ड अ कोलोक्वियल स्टाइल, जिसे हमने हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन में देखा था. Speak out and write down such lines and expressions that support the above statement. तो ऊपर के स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाली लाइंस आपको यहाँ से ढूंढ के निकालनी है. एक आपको करके दिए, डैश 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 यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क. So answer B dash 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 you are trampling on my feelings. C dash 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 you have failed me. D listen, all I ask is that listen. E don't talk or do, just hear me. F and if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. Second number question, put the following expression in the table of do's and don'ts as expressed by the poet. तो यहाँ पे दिए गए 8 स्टेटमेंट, तो कुछ पॉजिटिव है जो डू में जाएंगे, कुछ नेगेटिव है जो डोंट में जाएंगे. तो देखते हैं आंसर. तो ए प्लीज लिसन ये डू में जाएगा. बी गिव में एडवाइस ये डोंट में जाएगा. सी टेल मी वाई ये भी डोंट में ही जाएगा. डी सॉल्व माई प्रॉब्लम ये भी डोंट में ही जाने वाला है. जस्ट हियर मी ये डू में जाएगा. एक्सेप्ट एज अ सिंपल फैक्ट ये भी डू में जाएगा. कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फियर ये डोंट में आना चाहिए. वेट अ मिनट ये डू में जाएगा. थर्ड नंबर क्वेश्चन, राइट इन योर ओन वर्ड्स. तो फर्स्ट वन है, व्हाट डज द लिसनर डू व्हेन द पोएट आस्क्स हिम टू जस्ट लिसन, गिव 3 पॉइंट्स. तो पोएट जब सुनने वाले को कहता है कि कृपया सुनिए, तो वो क्या करता है, 3 पॉइंट्स बताइए. आंसर, व्हेन द पोएट आस्क्स द लिसनर टू जस्ट लिसन ही डज फॉलोइंग थिंग्स. First, the listener starts giving the poet advice. Second, the listener begins to tell the poet why he shouldn't feel that way. Third, the listener feels that he has to do something to solve the poet's problem. B. Why does the poet remark that advice is cheap? तो पोएम में पोएट ने ऐसा क्यों कहा है कि एडवाइस बहुत सस्ती होती है? आंसर, द पोएट remarks that advice is cheap because he can get the best advice from the columnists like Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper by spending just 20 cents. Now see which two facts show that the poet is confident of overcoming his irrational feeling. तो जो फीलिंग उसके पेरेंट्स को इरेशनल लगते हैं, वो उस इरेशनल फीलिंग को जीत लेगा, इसके बारे में वो कॉन्फिडेंट है. ऐसे 2 फैक्ट्स बताइए. आंसर, द फॉलोइंग लाइन शोज द फैक्ट्स दैट द पोएट इज कॉन्फिडेंट ऑफ ओवरकमिंग हिज इरेशनल फीलिंग. फर्स्ट वन, I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. Second, and when that's clear, the answers are obvious and I don't need advice. Fourth, according to the poet, how does God help people when they pray to Him for help? तो पोएट के अनुसार जब लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनकी मदद किस तरह करते हैं? आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट, when people pray to God, He helps them by remaining mute and He doesn't give any advice to them or try to fix things. He let them solve their problems by themselves. Fifth one, why should one learn to tackle one's problem by one own self? तो किसी ने खुद के प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने के बारे में, खुद ही हैंडल करने के बारे में क्यों सीख लेना चाहिए? आंसर, वी शुड लर्न टू टैकल द प्रॉब्लम्स बाय आवरसेल्व्स because it makes us confident and independent to solve them. Sometimes people don't have any care about our problems, so we must be bold to tackle them. 6. Why should seniors not overprotect or overpamper juniors? तो बड़ों ने छोटों का बहुत ज़्यादा ख्याल भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों? आंसर, seniors should not overprotect or overpamper juniors because it will make them so dependent. It ruins their self-esteem and can have severe effect on their self-esteem image. They would never attempt to do anything that is not familiar to them. They would not be able to face difficult situations themselves in their life.
and fear to tackle such situations. Thus, they would not become a successful people in their lives. 7. Find out and write down some proverbs, axioms, quotations that convey a message similar to self help is the best help. Answer. Some proverbs, axioms, quotations similar to self help is the best help are following. Self help is the root of all success in this world. God doesn't help a man who cannot help himself. If a person fails to help himself, others will not help him well. Your biggest enemy is you yourself, so be your own best friend. The best place to find a helping hand is at the end of your own arm. 8 में कहा गया है maintain a diary at least for a week. Write about your interaction with the people in your surroundings in 3 to 4 lines. Also write whether you find the interactions happy, unhappy, satisfactory, unsatisfactory, enjoyable, stressful, etc. So students, these questions you have to attempt by yourself. 9th में कहा गया है कि आपको लिखना है एक इनफॉर्मल लेटर जो लिख रहा है एक टीनेजर अपने पेरेंट को, जिसमें क्या है एक्सप्रेसिंग अ फ्यू थॉट्स फ्रॉम द पोएम। तो पोएम के कुछ थॉट्स वहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। यहाँ पे नीचे दिए गए कुछ फ्रेजेस भी वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो लेटर देख सकते हो, अगर पसंद आए तो यही लिख लीजिए या फिर इसे एज ए रेफरेंस के तौर पे देख के कोई दूसरा लेटर भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे लेटर हुआ ख़त्म। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पोएम्स देखिए ज़रा, इनविक्टस और ये वाली प्लीज़ लिसन, और दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना है कहाँ पे यस आएगा तो कहाँ पे नो आएगा। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे राइमिंग लाइंस की बात करें, इनविक्टस में राइमिंग लाइंस है और प्लीज़ लिसन में नहीं है तो वहाँ पे आएगा नो। अगर स्टेडी रिदम की बात करें तो लाइंस रीड करते वक्त इनविक्टस के पोएम्स को हम एक ताल में एक सुर में पढ़ सकते हैं, वही प्लीज़ लिसन को नहीं कर सकते वैसा। थर्ड की बात करें तो लाइंस एक पर्टिकुलर लेंथ में इनविक्टस की है, वही प्लीज़ लिसन की कहीं पे बहुत ज़्यादा बड़ी है तो कहीं पे कहीं बहुत ज़्यादा छोटी भी है। फोर्थ में कहा गया है कि हर एक स्टांजा में जो लाइंस है वो सेम है इनविक्टस पोएम में, वही प्लीज लिसन में देखा जाए तो कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 5, कहीं पे 1, सो यहाँ पे आएगा नो। फिगरेटिव लैंग्वेज की बात करें तो इनविक्टस बहुत ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच से भरा है, वही प्लीज लिसन में ऐसा नहीं कि फिगर्स ऑफ स्पीच है ही नहीं, हमें एलिट्रेशन मिल जाता है, रिपीटेशन भी मिल जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एस। तो इन दोनों पोएम को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि इनविक्टस ये एक एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल पोइट्री का, वही प्लीज लिसन की बात करें तो इसे फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो। थैंक you so much for watching the whole video and subscribing this channel. Keep studying. Bye bye.